previous class, we were talking about the relationship between total cost and marginal cost. And class, I also made you understand very specifically that even though in theory we say that marginal cost is the rate of change in total cost, but actually marginal cost has got nothing to do with changes in total cost. It is always related to the changes in total variable cost. In the short run, the total cost consists of two cost components. One is fixed cost and the other one is variable cost. And by nature, fixed cost does not change. By nature, the fixed cost does not change. Only the variable cost will change in the short run. This implies that whatever change is observed in total cost is due to changes in total variable cost. Right? Or in other words, in simple terms, as fixed cost in the short run remains constant, the change in total cost is always equal to change in variable cost. Whereas when you look into the long run, in the long run concept, the total cost has got only one cost element, and that is variable cost. That is variable cost, and the variable cost will change with the changing volume of output, and change in total cost will again be equal to change in total variable cost. Therefore, whatever may be the situation or the production process, marginal cost represents the change in total variable cost. Isn't it? By schedule, we also came to a conclusion that the marginal cost when calculated from TCE and marginal cost when calculated from TBC gave the same result. Gave the same result. So today we are going to start and establish another important relationship between two cost components. One is average cost and the other one is marginal cost. So today's topic in today's class, we are going to focus upon two things and will conclude the cost concept for your syllabus. That is the relationship between average cost and marginal cost. And finally, we'll be looking into the long run average cost curve. These are the two topics that we are going to study for today. First of all, to begin with, the relationship between average cost and marginal cost. Average cost and marginal cost. Can you please write the answer for this? To this question, relationship between average cost and marginal cost. You have all the data, all the schedules. You can draw the curve and show the relationship. Hopefully this is the highest presence of this entire semester. 24 students. I've never been present in class till date. First, 24th day. We have equal record. लिखता है आप लोगों को relationship between average cost and marginal cost.
क्या लिख सकते हो देखो। वेरी गुड। पढ़िए तो क्या लिखी? Initially, AC is start DC, then MC is less than AC. Second, if average cost is increasing, MC is more than AC. If average cost is at its minimum, MC is equal to AC. Yes, शेड्यूल में आ सकते हैं। और भी कोई लिखा क्या? Anybody else? Anybody else who has written? Copy paste. No, sir. Average fixed cost. Yes, sir. Average cost can fixed cost is Sir. equal to average cost and average variable cost. And average cost is the summation of the AC and DC. And the हाँ अच्छे से आ रहा है। And we also get by dividing the output total cost. AC is started decreasing at increasing rate and at the certain point it has started increasing. And MC cost shows the rate of change in GC. और And MC when negative cost shows CC rise for decreasing. वेरी गुड। आगे लेकिन ये जो तुम पॉइंट लिखी बाबू, ये तो पॉइंट हमारा टीसी और एमसी के रिलेशन में था। DC का भी है but इसमें यहाँ पे एसी और एमसी का रिलेशन लिखा है। average cost and marginal. पीछे को लिखा है क्या बॉयज? क्या हो देखिए क्या कर रहे हो? तुम जब तक
एक चीज को 4 बार नहीं करेगा तो मतलब कोई उपाय नहीं है ना ये। The relationship. Write down. I'm making you write. Okay. I don't have so much of time in the class. First point. Average cost. Average cost is cost per unit of output. Average cost is cost per unit of output. Average cost is what? Cost per unit of output. And is derived from total cost. Full stop. On the other hand, marginal cost shows the rate of change in TC. Shows the rate of change in TC. Rate of change in TC. And therefore is also derived from total cost. And therefore is also derived from total cost. The formula that you need to write is AC is equal to TC by Q and marginal cost is equal to delta TC by delta Q. Point number 2, we need to draw a schedule which will comprise of 3 columns, output, AC and MC. Output is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. At 0 level of output, the value of AC is undefined. Then you have 10 followed by 15, then by 20, again by 20, then by 18, 15 and 12. Is it right? Marginal cost we are having 10. Marginal cost we are having 10 followed by 8, then by 5, 7, 8, 10. This AC is wrong or what? Yes, Yes, sir. sir. Wrong. We are having what? 20, 14, 11, 11, 10, 10, 11, 13. This is 16 and this is 25. Now you need to draw a curve wherein we are going to have on y-axis average cost and marginal cost. Average cost and marginal cost, and on x-axis we are having output. Output we can write 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. And average and marginal cost we are having what? Maximum is 20. We can have a range of what? Range of 3. Range of 3 will do. Range of 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, and finally we have 21. We need to draw curves, both AC and MC.
Don't talk, don't talk. Yes, third bench. Seeker holder. Have you got the same type of curve? Yes, sir. Everybody done? Yes, sir. Now the thing that you should note is that the two curves are intersecting each other. Yes, And they are intersecting at the fifth unit of output. sir. Yes, Right? Where the value of AC and MC becomes equal. Right? Another important thing that one should note is that it is the marginal cost curve which is intersecting the AC curve, and at the point of intersection the AC is at its minimum. The AC is at its minimum. You won't find a value which is less than 10 for AC. Yes or no? Yes, sir. Would you find a value which is less than 10 for AC? No. Right? And at the point of intersection where marginal cost curve is intersecting the average cost curve, at that particular point, not only AC is at its minimum, but AC and MC have got equal values. AC becomes equal to MC. Isn't it? So at the point of intersection, we can mention a point, letter E. What we can mention? E. And E implies that AC is equal to MC. Now, moving on to the next point, point number 3. Point number 3. Initially, both AC and MC curves are falling. Initially, both AC and MC curves are falling. Initially, both AC and MC curves are falling, but the rate of fall in marginal cost is more than the rate of fall in average cost. Is more than the rate of fall in average cost. Full stop. It is clear from the fact that while falling, the marginal cost curve is below the average cost curve. The
marginal cost curve is below the average cost curve. क्लियर है? क्या लिखा हम लोगों ने? शुरुआती दौर में both average cost and marginal cost curves are falling, but the rate of fall in marginal cost is more than the rate of fall in average cost. How can we say this? We can say this by seeing that on falling, the value of marginal cost is less than the value of एवरेज. मतलब ये कि मार्जिनल कॉस्ट में जो गिरावट है वो एवरेज कॉस्ट की गिरावट से तेज. क्या है? तेज. आगे लिखिएगा. the marginal cost curve, the marginal cost curve while rising from its minimum, intersects the average cost curve intersects the average cost curve at a point where the average cost curve is at its minimum. The average cost curve is at its minimum. And average cost becomes equal to marginal cost. Average cost becomes equal to marginal cost. Next point. Finally, both average cost and marginal cost curves, both average cost and marginal cost curves are rising, but the rate of rise in marginal cost is more than the rate of rise in average cost. Full stop. Than the rate of rise in average cost. Full stop. It is clear from the fact that while rising, the marginal cost curve is above the average cost curve. Cost curve is
above the average cost curve. अब लास्ट में एक पॉइंट देखना, बोर्ड पे देखिएगा, अगर आपकी कॉपी में भी कर्व ठीक से बनाए होंगे तो वो आपको समझ में आएगा कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट देखिए। मार्जिनल कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट 5 है। थर्ड यूनिट पे आया, इस पे आया। एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट क्या है, उसका वैल्यू क्या है? ये कहां पर आया? फोर्थ पे आया। एक को लेंगे या दोनों को लेंगे? जो पहले आएगा, जो पहले आएगा। अरे बात समझ में? तो पहले क्या आ रहा है? फोर्थ यूनिट वाला टेलर, राइट? तो इससे आप क्या इंफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट, मार्जिनल कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट से लेफ्ट है, यानी कि पहले आ रहा है। लेफ्ट होने का मतलब क्या हो गया? पहले आ रहा है। मतलब ये कि मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट पहले आएगा और एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट बाद में आएगा, यही ना मतलब हुआ। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व लाइज टू द राइट ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। कैन वी से दिस? एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से राइट है और मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से लेफ्ट है। कैन वी से दिस? Is it clear? ठीक है, अब आगे हम लोग लिखेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। एक हेडिंग दे दीजिएगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। इसको हम लोग शॉर्ट में LAC भी कहते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है ये, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है। क्या है ये? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, LAC। वाई एक्सिस पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और यहां पे आउटपुट। इसको ड्रॉ कर लीजिएगा पहले, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। Class is it done? Yes, sir. ठीक है, अब थोड़ा इसको सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग खुद से। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का दो और नाम है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का दो और नाम है। पहला नाम है, आप इसको प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। कौन से कर्व कहते हैं? प्लानिंग कर्व। और इसका दूसरा नाम है, आप इसको एनवेलप कर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनवेलप कर्व, लिफाफा। क्यों है ये एनवेलप कर्व? Why is it referred to as an envelope curve? एनवेलप पे आप किसी चीज को रखते हैं, तो आखिर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का नाम एनवेलप कर्व क्यों पड़ा? क्या लॉजिक है इसके पीछे? There has to be some logic, specific logic behind it. What is that?
कहता है इसमें कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में हम लोग शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को मिलाकर ही लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाते हैं. You form a long run average cost curve by joining the locus of short run average cost curves. By joining the locus of short run average cost curves. अब देखिए, अगर मैं इसको आप लोगों के लिए बना पाऊं कहीं, या देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं ये शॉर्ट रन ठीक है. ये आप पहला एसएसी है यानी कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 1, ये एसएसी 2, ये एसएसी 3, ये एसएसी 4 और ये आपके पास क्या है एसएसी 5, यानी कि 5 क्या है शॉर्ट रन. अब इसका जो भी पॉइंट है, ये सारा जो पॉइंट है, इसको जब आप मिलाते चलेंगे ऐसे, तो ये मिलाने से जो कर्व बनता जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. समझ गए? इसीलिए इसको क्या कहा गया एनवेलप. क्लियर है? यानी कि इसने अपने आप में कौन से कर्व को शामिल कर लिया? समान क्या है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट. तो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का 2 और नाम है, प्लानिंग कर्व पहला और दूसरा ठीक है. गुड. अब अगर और हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, so you might see that long run average cost curve is a dish shaped है. ये dish की तरह, तस्तरी की तरह है, और नहीं तो आप इसको डिस्क शेप भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? डिश शेप या डिस्क शेप, या कुछ लोग इसको यू शेप भी कहते हैं. क्या कहते हैं? यू शेप. अब ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है, इसको पढ़ना और समझना थोड़ा आसान है. ये आप देखिए, पहले आप इसके कर्व के नेचर को 2 हिस्सों में बांटे. पहला तो ये फॉल किया, और दूसरा जब ये मिनिमम पे आया तो मिनिमम से ऊपर की ओर राइज. So what you all should be observing is that initially the long run average cost curve is falling, and this falling part of long run average cost curve is referred to as negative slope. क्या कहते हैं इसको? Negative slope. And once this long run average cost curve starts to rise from its minimum, it is known as positive slope. What do you call it? Positive slope of LAC. Positive slope of LAC. Now, positive slope of LAC and negative slope of LAC. Why this happens and what it shows? Right? We have 2 questions to answer. One is why this happens and what it shows. ये क्या दिखाता है और ये होता क्यों? So what it shows that initially, in the beginning, in the long run, if outputs are increased, the long run average cost is falling. The long run average cost is falling. Right? Now you may argue, sir, why is it falling then? Why is it falling? Because there is a Why the long run average cost is falling in the long run when you are increasing the output? There is a very logical reason behind this. It says, due to the operation of the law of return to scale. Operation of what? Law of return to scale. Law of return to scale.
to scale says that a producer who is operating in the long run and using all the inputs as variable might increase his output at an increasing rate in the beginning of the production process. याद कीजिए जो हम लोगों ने शॉर्ट रन लॉन्ग रन में डिफरेंस लिखा था और मैंने लिखवाया था लास्ट पॉइंट पे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लागू होगा, उसमें 3 स्टेजेस था, सब लॉस था। सबसे पहला था लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और तीसरा था लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। राइट, तो लॉन्ग रन में अगर आप ऑपरेट करते हैं तो शुरुआती दौर में एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द आउटपुट वुड बी इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। Now what this means? आउटपुट का इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना, इसका मायने क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल, मैं अगर आपको समझाऊं, अगर आपने अपने इनपुट को 10%, अगर आपने इनपुट को कितने से बढ़ाया, 10% से बढ़ाया, एंड द आउटपुट हैज इंक्रीज्ड बाय से 15%, 12%, 20%, 30%, तो आउटपुट हैज इंक्रीज्ड, नो डाउट. But the rate of rise in output is more than the rate of rise in input. Isn't it? If this happens, then we observe the law of increasing return to scale. What is law of increasing return to scale? Law of increasing return to scale says that output initially rises at an increasing rate in respect to an increase in the inputs. जिस रफ्तार से या जिस प्रतिशत से आपने इनपुट को बढ़ाया, अगर उससे ज्यादा प्रतिशत से आपका आउटपुट बढ़ा, तो इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. तो योर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज इनिशियली फॉलिंग. इट शोज दैट योर आउटपुट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट इन द लॉन्ग रन. आउटपुट जो है वो राइज कर रहा है, किस रेट से राइज कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट से. तो जब आउटपुट इंक्रीजिंग रेट से राइज करेगा तो स्वाभाविक है कि मेरा कॉस्ट क्या होगा, कम होगा. कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. Now once you have achieved this point, you have come to a point where your long run average cost is at its minimum. What does this mean? This means that you have optimally utilized all the available resources with you. There is no further scope of better utilization of the resources. जहां पे आपका कॉस्ट पर यूनिट मिनिमम है, वही पॉइंट होगा जो इस चीज को बताएगा कि भाई मैंने अपने पास उपलब्ध तमाम संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल कर लिया, अब इसके अलावा और इसके अतिरिक्त इस्तेमाल करने की कोई गुंजाइश नहीं बनती है. परिणाम ये हुआ कि मेरे पास जो उत्पादन लागत है, जो औसत लागत है, वो जो एवरेज कॉस्ट है, वो अपने मिनिमम पे है. नाउ if the producer indulges himself or herself in further production process by introducing more inputs in the hope that the output will again increase at an increasing rate, perhaps his thought process is wrong. उसका जो thought process है वो कहीं ना कहीं गलत है. गलत क्यों है? क्योंकि अब अगर इस पर्टिकुलर लेवल के बाद भी उसने अपने इनपुट को बढ़ाया तो शायद अब उसका आउटपुट बढ़ेगा, तो लेकिन उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगा जिस रफ्तार से इसके पहले बढ़ता था. अब आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन किस रेट से बढ़ेगा, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा. तो इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. So the positive slope of LAC is the result of law of decreasing return to scale, and the negative slope of LAC is the result of the operation of the law of increasing return to scale. अब हुआ कि अगर मैंने इनपुट को 10% से बढ़ाया तो आउटपुट ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा नहीं, आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन 10% से कम से बढ़ेगा. 8% से बढ़ सकता, 6% से बढ़ सकता, 5% से बढ़ सकता, बढ़ेगा. लेकिन जिस प्रतिशत से आपने इनपुट को बढ़ाया, अगेन द क्वेश्चन इज कि सर ये तो समझ में आ गया, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, इट्स फाइन, लेकिन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा क्यों? लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा क्यों? कुछ तो कारण होगा. नहीं बात समझ आ रही? ये तो अभी हमने रीजन पढ़ा कि भाई नेगेटिव स्लोप ऑफ एलएसी होगा क्योंकि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल काम करेगा. पॉजिटिव स्लोप ऑफ एलएसी होगा क्योंकि
लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल काम करेगा। मेरा सवाल आप लोगों से ये कि आखिर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्यों होगा? व्हाई विल इट हैपन? व्हाई विल इट टेक प्लेस? क्यों होगा वो? आपको अगर याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, इफ यू कुड रिमेंबर। पढ़ा था हम लोगों ने इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग इन द लॉन्ग रन, और बताया था इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब कॉस्ट रिडक्शन से है। किससे है? कॉस्ट रिडक्शन। तो जब आप लंबे समय में काम करेंगे, जब आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटरनल फैक्टर से या फिर एक्सटर्नल फैक्टर से कम होगा तो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ रिटर्न टू स्केल में काम करेंगे, और जब आप लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में काम करेंगे तो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होगा? फॉल करेगा। और ये राइज कब करेगा? जब आप लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में काम करेंगे। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न क्यों होगा? डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। किसकी वजह से होगा? डिसइकोनॉमीज। और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स की वजह से जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो? बढ़ना शुरू हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो जब डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का, तो लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल काम करेगा। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये क्यों काम करेगा? क्यों काम करेगा? डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये क्यों होगा? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों काम करेगा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कुछ पूछना है किसी को? हाँ नहीं ना? चलो ठीक है। 90